Namaskar. Welcome to this video in which I will discuss a question from the history and culture part of GS Mains Paper 1 IAS 2018. The basic objective of this video is to give the students the idea as to how to develop an answer, how to frame the answer plan, and how to conclude the answer. First of all, I would like to thank all who have responded positively on my previous videos. I would also like them to like, comment and share this video. They should see the video till the end so as to get maximum benefit out of that. Dear friends, who knows not the culture power of India? History and culture is the part of the paper 1 of mains examination. I have devised a series of the questions one by one. This is the question number 1, which is taken up for the discussion today. Now I move on to the discussion. See in the slide, question number 1. Safeguarding the Indian art and heritage is the need of the movement. Comment. So in this question, you need to pick the central theme. What is the central theme? Indian art heritage. It need to be safeguarded. Why? Need of the movement. So safeguarding the Indian art and heritage is the need of the movement. Indian art and heritage, as you see in the figure on the slide, is very diverse, is very dynamic, it's vibrant, it's inclusive, it's very powerful. Indian art heritage is available to us. It's the work of our ancestors for the thousands of the years. You know, Indian culture stands for diversity. It's known for its great continuity. It's the result of the intermixing of diverse cultures, traditions, etc., etc. So, Indian art heritage is available to us in the form of paintings, architecture, sculpture, dances, music, tribal arts, crafts. Tribal arts और crafts बहुत important है. Handicrafts, puppetry, इनमें क्लासिकल ट्रेडिशन भी है और फोक ट्रेडिशन भी है. क्लासिकल ट्रेडिशन जैसे क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, सत्रिय, ओडिसी, ये क्लासिकल है. और जो लोकल डांसेस जैसे घूमर, गिद्दा, भांगड़ा, दीज आर द लोकल डांसेस, फोक डांसेस. इसी तरह से क्लासिकल म्यूजिक है जैसे हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक, बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल. एंड फोक म्यूजिक है जैसे पंडवानी, फॉर एग्जांपल पंडवानी. मांड is a very popular folk music in Rajasthan. Alakhand is a very popular folk music form in central India. India is a country of several folk dances. Handicrafts items, techniques based handicraft items are also several. तो इनको प्रिजर्व करने की, सेफगार्ड करने की जरूरत है. इन पर प्रेशर है, तो सेफगार्ड करने की जरूरत क्यों है? हमें वो प्रेशर नहीं बताना है. ट्राई टू पिक द बेसिक पल्स ऑफ द क्वेश्चन. सेफगार्ड करने की नीड क्यों है? नीड ऑफ द मूवमेंट. आज के जमाने में नीड क्यों है? इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर. India is reflecting its power in economics, in political fields, in defense. India should also reflect its culture power. Culture power is basically a power in which Indian culture and traditions are reflected all over the world, and it's a sense of belonging to a culture. It's a sense of belonging to a heritage which is very rich, and we feel प्राउड ऑफ इट. ये हमारी कल्चर पावर है. इतना लेंदी तो आपको इसे बताना नहीं, बस बता देना है कि डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, वो हेरिटेज है हमारी, और
वो समझना है आपको कि आर्ट हेरिटेज है क्या। देन इंट्रोडक्शन में क्या देना है, इंट्रोडक्शन में आपको देना है मीनिंग ऑफ द आर्ट हेरिटेज। जो आर्ट हेरिटेज है वो हमारा जो एंसेस्टर्स हैं, whatever they did do, whatever they have left us in the form of legacy, in the form of monuments, in the form of dance, music, this is the art heritage of India, and we need to preserve it. Why? Because it's having the social, economic, and political ramifications, political implications on the future of India in the 21st century. ये दो पार्ट्स को आपको इसमें नहीं डालना है, मैंने आपकी जानकारी के लिए डाले थे कि the directive principles of the state policy and the fundamental duties in the constitution, they enjoin the state as well as the citizens to preserve and promote their art, and UNESCO World Heritage is also instrumental in that direction. लेकिन आपको ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल, ये आपको ये नहीं करना है जो रेलिवेंट चीज नहीं है। ये जानकारी तो है, अच्छी जानकारी है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट और मे नॉट बी सूटेबल टू अ पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। आपको नॉलेज है किसी चीज की बहुत ज्यादा, तो उससे आपका आंसर नहीं बनता। आंसर जो बनता है वो बनता है आपका सिलेक्टिव नॉलेज विच इज रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर आंसर, जो पर्टिकुलर आंसर के लिए रेलिवेंट है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द डिफरेंट डायमेंशंस नीड टू प्रिजर्व। प्रिजर्व क्यों करते हैं? तो सोशल एंड कल्चरल है एक, तो इसमें आपको हिस्टोरिकल मार्कर के तौर पर हमें यूज करते हैं। कोई भी जो आर्ट मॉन्यूमेंट है, जैसे ताजमहल, इसका अपना एक जियोग्राफी है, इसकी एक लिमिट्स है, इसका एक रीजन है। कोई भी और मॉन्यूमेंट्स है जैसे महाबलीपुरम है, इसका एक अलग रीजन है, उसमें आर्ट, उसमें हिस्ट्री, उसका बेसिक फीलिंग स्ट्रक्चर। जैसे ताजमहल है, ताजमहल बेसिकली इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां विद मुमताज महल। इट्स टेक्निक्स, टेक्नीशियंस, स्किल्स, कहाँ से पत्थर मंगाया गया, वो सारा एक उसका एक जियोग्राफिकल रीजन है। तो जो मॉन्यूमेंट है वो एक तरह से फुटप्रिंट है, इससे हम हिस्ट्री फॉर्मेशन में इसकी मदद मिलती है इससे, और हिस्टोरिकल जो कंस्ट्रक्शन है उनमें काफ़ी फायदा होता है। इट्स ये दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, इट गिव्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए नेशन। हमसे पूछा जाए भाई आप कहाँ के हैं, वी आर इंडियन, तो आपका आर्ट और हेरिटेज तो बहुत रिच है, तो इट गिव्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए नेशन। जैसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स को हमने उनको एक फीलिंग दी, उनको एक विश्वास दिया कि इफ यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, योर कल्चर, योर हेरिटेज विल नॉट बी अलाउड टू डिस्ट्रॉय और डैमेज। तो वो अब इंडिया के पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं। सोर्स ऑफ कल्चरल प्राइड, वी फील प्राउड ऑफ आवर कल्चर। हमें लगता है कि भाई हाँ, हम इतनी खास, इतनी बड़ी कल्चर के पार्ट हैं। जैसे in 19th century, 20th century, Indians drew a lot of inspiration from the concept of the golden age, Gupta age as the golden age, and then many young men participated in the freedom struggle. Then regional and national identity, regional and national art के दो फॉर्म है, एक तो लोकल आर्ट है और एक नेशनल आर्ट है। लोकल जो है नेशनल का पार्ट बन सकता है, नेशनल आर्ट का लोकलाइजेशन हो सकता है। So it gives a sense of satisfaction to both the regional, local people as well as the national. National level के institutions हैं और folk जो traditions है वो है। It is the collective legacy. It's the composite culture. जैसे temples हैं, temples of North India, they are basically the symbols of composite culture. इसी तरह से सूफी खानकाहास, they are the symbols of the composite culture. सूफी सेंट्स जो कि लिबरल थे, कट्टर सूफी सेंट्स की बात नहीं कर रहे, जो लिबरल सूफी सेंट्स थे, their centers became the center of common gatherings of the Hindus and Muslims all alike. Strength of the nation, स्ट्रेंथ, इससे नेशन मजबूत होता है। जितना आपका जो कल्चर है वो जितना डाइवर्स होगा, जितने आपके मॉन्यूमेंट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे, हजारों मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में,
उन सब से मिलके एक जो कंट्री बनता है दैट बिकम्स वेरी स्टेबल कल्चर, वेरी स्टेबल कंट्री, स्टेबल नेशन। तो आर्ट हेरिटेज गिव्स द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशन। ये पॉइंट हो जाएगा आपका। इट इज द basis of the peace and security, communal harmony and political stability in the country। ठीक है, क्योंकि जो टेम्पल्स हैं, जो जैन टेम्पल्स हैं या मुस्लिम्स के जो मॉस्क्स हैं या गुरुद्वाराज हैं, गुरुद्वारा दे आर द सेंटर्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एज वेल एज कम्युनल हार्मनी। You know, Deoband school has been instrumental since its foundation in 1867, has been instrumental in promoting the national unity and solidarity। जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी तो देवबंद स्कूल स्टूड अपोज टू दैट, और देवबंद स्कूल ने उसका विरोध किया, देवबंद विचारधारा ने। ऐसे ही जैसे जो साई बाबा का जो कॉन्सेप्ट है, साई बाबा का जो सेंटर है, इट्स द सिंबल ऑफ द कल्चरल कॉमिंगलिंग ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इससे क्या मिलता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। व्हेन द ट्राइबल कल्चर्स एग्रीड टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन कल्चर, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने का भी काम किया, देन इट बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने का मौका नहीं मिलेगा। नीड टू प्रिजर्व द, इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन आ जाती है, जैसे हेरिटेज टूरिज्म आजकल एक नया वो बन गया है। इट्स ए बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, क्राफ्ट गुड्स हैं, वी कैन अर्न ए लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग ऑफ द फोक आर्ट्स लाइवलीहुड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फोक आर्ट्स can also be used and have been used for earning foreign exchange as well as the livelihood for the marginalized segments of the society or the folk segments of the society। It has a lot of employment potential। जहाँ भी हम किसी monument, किसी art monument को renovate करते हैं, we prepare a circuit of the trade, circuit of the religion, religious route, जैसे हम बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं, तो then it needs to build a huge infrastructure which involves lot of many people। उसको फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उससे क्या होता है कि वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है, उसमें फिर उनको लोगों को रोजगार मिलता है, उससे जो इंक्लूसिव ग्रोथ बनती है। देन it generates lot of tax revenues in various forms। जैसे इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा मीन्स जो इंडियंस हैं, इंडियंस जो फॉरेन में रह रहे हैं बाहर, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो जिन्हें हम नॉन NRI भी कह देते हैं, तो वो लोग बाहर रहते हैं बट दे आर फीलिंग कनेक्टेड टू द इंडियन कल्चर, दे पे विजिट टू इंडिया। उनके साथ साथ और भी सारी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। At the same time, the Indian diaspora living in the foreign countries has come to our help at several times। जब 1991-92 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और हमारी सरकार के पास जरूरी जो डॉलर नहीं थे, उस समय बैंकरप्सी की नौबत आ गई थी, एंड देन डॉलर्स, crores of the dollars, billions of the dollars were transmitted or remitted by the foreigner, by the Indians living in the foreign countries। इस तरह से हमारी हेल्प हुई। When the Indian diaspora sends huge remissions to India yearly basis, तो it's a big foreign exchange earning source for India। अब foreign relations की बात आ जाती है। Need to preserve foreign relations। The culture power is one very important source of power of India। Power paradigm of any country is formed of three things। hard power, जैसे military power है आपकी, वो hard power कहलाती है। Then the economic power, this is another structure, block of the power, and then the soft power, culture power। किसी कंट्री के पास अगर हार्ड पावर है और
इकोनॉमिक पावर है तो वो सस्टेन तो कर सकता है, बट इन द लॉन्ग रन द चांसेस ऑफ इट्स सस्टेनेंस आर ब्लीक. India has ample culture power which can be used for bolstering up its claim to a superpower, to one of the superpowers in the 21st century, because we have a very hoary culture, past culture, and we know that Indian diaspora is living all over the world in 178 countries of the world. That's why the government started in 2010 in Nalanda Soft Power Project, जब नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से एस्टेब्लिश किया गया. That's why the government is also trying to develop the Buddhist trade circuit, pilgrim circuit. That's why Buddhists drawing from different countries of Southeast Asia and Sri Lanka and other countries like China, Australia, so they would come to India, and then it would be meaning the reflection of Indian culture power. इसी तरह से इंडियन जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा लिविंग इन फिजी, इन मॉरिशस, इन साउथ अफ्रीका, इन नटाल एंड अदर कंट्रीज, they do still explore the Indian culture, and they have set up the temples. They haven't forgotten their roots of culture in India. Peace generating civilization. What is the most important aspect of the Indian art heritage? That India has been taken as a peace generating civilization. Culture stands for goodwill and harmony. इंडिया ने किसी के ऊपर युद्ध थोपा नहीं है. इंडिया ने अपनी सेल्फ डिफेंस में तो लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमने किसी के खिलाफ कोई एग्रेशन नहीं दिखाया अपनी तरफ से. That's why India's soft power is reflective in the NAM and other forums of the world organizations. इसलिए इंडिया की पावर इससे बनती है. इंडिया thus has a very strong claim to be a very great power in the 21st century, cruising ahead on all the three fronts: economic, military as well as culture. तो ये इसका सिग्निफिकेंस है. इसका कंक्लूजन ऐसे ही कर देंगे. नाउ द गवर्नमेंट, जो मोदी जी है, उनका ये भी कहना है एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड कल्चरल प्लूरलिज्म, दोनों ही बातें हैं इसमें. India need to preserve the cultural pluralism, its diversity. At the same time, India need to promote the national unity and national integration by involving the different segments of the Indian culture and society, by giving them the sense that they belong to a common nation, by promoting, preserving, and safeguarding the cultural monuments or art monuments. Thus, we come to conclude this video. What is your take on this video? Write to us in the comment box, as also in the email. Dear friends, I also take the classes for the general studies, civil services, as also the optional subject history. If you are interested, you can contact us, and I would soon be coming back with another interesting and useful video on another question of 2018 Civil Services Mains Examination. With this, thank you.